इससे पहले कि श्री डोंगरे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूं, आप सभी से निवेदन है कृपया शीघ्र अपने स्थान ग्रहण कर लें। Exit doors. Ladies and gentlemen, we are moving on with the next presentation, which is by Shri Praful Chandra Dogre, who is a postgraduate in mechanical engineering from NIT Surat, has been serving in the Central Power Research Institute, Bangalore since 2007. His areas of interest include design, analysis and testing of special types of HTLS conductors, residual life assessment of boilers, renewable energy, waste to energy. He has few research paper publications in national and international conferences on the areas of competence. He has been nominated as a member of National Mission on the Use of Biomass in 2021 and contributing to implementation on the use of agri-residue, biomass pellets in the thermal power plants. He is also a member in Technical Panel Committee and Subcommittee of BIS for Standardization of Solid Biofuels Biomass. And ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Praful Chandra Dongre ji for his presentation. All those standing on the side are requested to kindly either take their seats or move outside the hall, please. We would request all conversations to be taken outside the hall. I invite Shri Praful Chandra Dongre ji for his presentation. Dongre ji is here with us.
Ladies and gentlemen, kindly be seated. We are going to have our first presentation of the session, which is a presentation by the mission, for which we have with us Sri Praful Chandra Dongre ji. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Sri Praful Chandra Dongre ji for the theme presentation on the mission. Let's put our hands together to welcome him. Good afternoon, ladies and gentlemen. Actually, it will be a little bit tough schedule after a post-lunch session. So I would like to welcome on behalf of my team Samarth for this 3P conference of Pellet to Power to Prosperity. So these are few of the contents of this 3P conference. And we will see, first of all, the global scenario. Then we will switch over to national scenario. And then what is the generation of agro-residue in India. Then, of course, the crop residue, which are essential. And then biomass co-firing technologies, benefits for stakeholders, government schemes, and then initiatives taken by Mission Samarth, key developments in this sector, and of course, way forward. So, as you all know, that global warming is a long-term warming, and from the past few decades, and its pace has been significantly increased from few years, we can say. And therefore, climate change is a part of global warming. And the process like the gases, like the greenhouse gases, which are increases, which affects the climate change and ultimately causes of global warming. So in this regard, if we see the factors may be different, and it is important also from some point of view when we want to increase the economic sector of any country. But of course, at the same time, we have to see what will be the effects of living organisms in the planet itself. So that is also a very important point. But if we see from the emission point of view, like in 2021, it was like 36.3 gigatons of CO2 overall was generated. And globally, like 140 billion metric tons of biomass. If you see from the biomass from the global point of view, 140 billion metric tons of biomass waste was generated, which was unutilized, may be utilized at some other sector, but I'm just talking about from the economic point of view, and which has an agriculture equivalent of about 50 billion tons of oil. So this is a huge availability and potential, which can provide renewable energy to almost 1.5 billion people of the country. So of course, we have to look into in this subject also, and there is a huge potential as we are seeing. So if we see the biomass, means which can provide around 3,000 terawatt hour of electricity by 2050, and which can reduce around 1.3 billion tons of CO2 if properly tapped in a proper way.
So in 2021 itself, the renewables has a contribution of around 27% in electricity generation of 25,000 terawatt. This is I'm saying about globally. And of course, the Asia-Pacific region, which is contributing in a very significant way, followed by Europe and North America. So in that sense, if we see, the India is growing with a rapid pace in the field of renewables. So if you see from the CO2 emission point of view, the CO2 emission from coal has been increased from 50 up to means like more than 15 gigatons, and CO2 emission from oil is more than 10 gigatons, and CO2 emission from natural gas is more than 7.5 gigatons. And this is basically a 5 to 6% increase from the post-pandemic period, which I have already explained that, that we have to see from the economic sectors, but other living organisms in this planet also has to be considered. Of course, I accept that for the requirement of the modern civilization, fossil fuels we are being using from so many decades. But now the era has changed, and renewables, there is a need for change, and renewables is the reasonable and the sustainable solution for all these kinds of requirement, which can be properly tapped. And which I want to say that biomass is a part of renewable, and of course, India is showing very rapid growth in the field of renewables. Now, if we see from this point of view, like from Indian perspective, if we see, the agricultural crop production in 2021 was around 755 million metric tons, and after using at various level like process industries, if we see, or like a domestic purpose, or suppose in fodder case also, still the surplus unutilized this straw waste was around 228 million metric tons. If we tap this potential properly, it can generate more than 28,000 megawatt of electricity, which can provide to all the people which are still are away from the electricity in some of the parts of India as well. So the most of the states who are contributing for this is like Maharashtra, Punjab, Haryana, UP, and Gujarat as well. So if like some other part, if we see like which are the mainly crop residues who are doing contribution for this 28,445 megawatt of electricity from the surplus biomass. So it is more than 50% share. If you are going to see, it is mainly because of rice residue, cotton residue, and wheat residue, which has a potential of more than 50%. And if this potential is tapped properly, then of course by 2030, we can still go more than 40,000 megawatt of electricity. So this is a huge untapped potential. And in that direction, if we see the state-wise availability, as I've told, it is like how this 228 million metric tons came from all the states, from each of the states. So this is like a data which has been unutilized after using at certain levels like for the domestic. And so overall, all the states are having, sorry, this one state-wise, and then overall, all these states are having biomass in some or the other way. But still, the incidence of burning has not been stopped, which is the main objective of this mission. Now, if we see from the 2020 to 2022, of course, it has been drastically reduced from 2.33 lakhs burning incidents to 1.98 lakhs in 2022. But of course, this is what we say, this, we have to say this is a government initiative which they are doing, and the initiatives of the government are showing results for that. Likewise, Ministry of Power has also taken such initiative, we can say proactive action in this direction, and they have set up a mission biomass, and we can say that still it is 1.5 years young only, this mission, and it is rechristened as mission Samarth. So these burning incidents, maybe this result is showing the results of that mission as well. So in this way, what are the objectives of our mission? The objectives of our mission is to eliminate complete stubble burning from the open atmosphere and thereby increasing or improving the air quality index. This air quality index, if we increase, means of course it will
lead a good quality life to all the individuals, not only from NCR or Delhi regions. It is not like that some people from other parts thinking it is related to centralized part of this capital region, but this is not the case. As I've shown, almost all states are having surplus biomass, and some or the other way, it is going west. So this unutilized waste, if we use it, definitely this pollution, there is a solution to this pollution, and the problem is also lies, but the solution is also lies, and that's what the government has made some initiatives in this direction, which in our earlier references, Honorable Secretary has also referred that although it may take a few years also to contest with the ongoing coal supply chain, but of course, in that direction, it is a positive step, and everybody has to come forward in this direction. So problems are there. And if these problems can be solved, it can be solved instead of burning in the open atmosphere. If it burns in the thermal power plants, of course, everybody will have a win-win situation for all our stakeholders. Like farmers will have benefit because they have an additional income with that one. And more importantly, there is a lot of job opportunities to our local youths at regional levels. So this is a very, very important issue. And if we see in that direction, there has, as I've told, Ministry of Power has taken a very good initiative, like proactive steps by setting up of national mission, which is rechristened as Samarth Mission Samarth. Because as we have seen in the north and northern parts of India, basically, more than around 35 million metric tons of paddy straw are being burned in Punjab, Haryana, UP, and other parts like Rajasthan, Gujarat, or so, depending upon the availability of their regional crops. So with that crops, and first of all, we cannot say anything on that because we don't have to point out anything because they have their own point of reasons also burning, because the harvesting season from the paddy crop to the next winter sowing crop, it is very less, around 12 to 15 days. And they have a very small time to take out the complete stubble from the field. And there are no other chances. Sometimes they are thinking there are no other chances. And of course, from their point of view, it is somewhat, we can say, yes, it's okay also. If I am a son of a farmer, I will think, yes, of course. But that is not the only solution. But there are other impact of that particular burning. That's why the solutions has been given by the Ministry of Power, Government of India, to go in a good way, how to solve this problem. So, and moreover, the methods for the agriculture implement, what our farmers are totally taking is, maybe there is a lack of agriculture or harvesting method to take out the complete stubble from the field. That's what the remaining straw, what they are thinking is the easiest way to burn it, because there are less time, and the lead time is very less from harvesting of one crop to another crop, and that is the easiest way. That's what in case of marginalized farmers, they can think, okay, they can take it out. But what about the farmers who are running like 10 acres or 50 acres of land? It's very difficult for them. So in that case, government has taken a very proactive steps by setting off of Mission Samarth. And we are doing very, good initiatives in this direction. And many more steps has been taken, which I would like to highlight here. So in that direction, Ministry of Power has already issued policies, in fact, revised policies for the power plants to enable them to use. In fact, it mandates to use 5 to 7% of co-firing in their thermal power plants. And this obligation has to use depend upon coal to coal, like from first year to second year, and so. So like that, and moreover, very important thing is this power generation from this co-firing thermal power plants is considered as renewable energy. This is a very important, and moreover, it is also eligible for meeting renewable purchase obligations. So this is a very, very important steps which the power plants has to take care, and yes, and they are doing also. They are doing also. And then if we see the market scenario point of view, so there is market scenario for all the stakeholders, right from our farmers, pellet manufacturers, as well as the GENCOs. So for farmers, there are from 15,000 to 20,000 crore of business. And then for pellet manufacturers, it shows around 30 to 35,000 crores. And of course, our power generation people, they are contributing for this green energy. And they not only this generation, but of course the generations to come will definitely remind them and
will definitely remember them for this activity, for taking proactive steps in burning this biomass in co-firing in the coal. So the overall total market scenario is around 55,000 crore in this sector. And of course, the supply chain, what we are facing or what we are seeing in this is a little bit like a challenge is what we can say. It is a challenge to the mission how to implement this supply chain, because lot of surplus is there, and how to tap in a proper way. Everybody has their own, what we say, queries, or we can say problems also. But at one steps, we cannot solve it like 1 year or so, because we have to, as sir has already, Honorable Secretary sir has told, we have to contest it, we have to compete with them. And of course, we need your support in that direction. And definitely, you will come up what I'm thinking. Yeah, though this biomass ecosystem is very important. Whenever after harvesting, the rice straw is remaining on the field, that has been cut, and then it has been raked at a proper place, almost at near to the corner of the field, and then it has been baled by a baler machine. Either it is of a round shape or square shape. Round shape is generally preferred because it is very easy to handle from one place to another, and then it is transported to the pellet manufacturing plant. And from pellet manufacturing plant, there are different processes are there to manufacture that pellets, and then it is transported to the thermal power plants. And in thermal power plants, the electricity is generated. But what are the technologies in thermal power plants it is to be used? There are basically 3 types of co-firing technologies. In India, we are following like a direct method, but also indirect and parallel firing is there. So in fact, I'm not going into the detail of the process of this co-firing technologies, because this is only like direct we are using it. And I'm very glad to say that almost 42 numbers of power plants are already started co-firing in their power plants with the initiative or with the efforts of our mission team. And then, of course, after going from these thermal power plants, of course, how it comes in the form of pellets is also important, because lot many topics has been discussed in the previous session during the inauguration session, like torrefied pellets and non-torrefied pellets. So of course, Mission Samarth actually encouraging for torrefied pellets. There are reasons also, because it brings its chemical properties more closer to coal, and yes, it is a hydrophobic material, and of course, its GCV is roughly increased by 20%. So if I am saying hydrophobic material, because it is water resistant. Why? Because this raw biomass is a seasonal material, because its availability depends upon season to season, and it varies season to season. So it is not possible to keep that biomass for a longer period. So it has to make it water resistant, so that with this torrefaction technology, we can use it for after a longer period also. We can store it for a longer period also. So these are a few of its highlights, how it is going. So this process and all, actually it is already available. But okay, if somebody is new, like some of the budding entrepreneurs are also there, they were discussing with me. Of course, this torrefied technology is important. So like, suppose when the raw biomass comes from the farmers to the pellet manufacturing unit, it has to be shredded in a small, like chips, to make its uniform shape. And then it is passed through the screener, so that the magnetic particles or the other metal particles, which can be harmful during the combustion process. So it has to be removed, and then it passes through the dryer, so that all the moisture content, because as we know, the moisture and the volatile matter in the raw biomass is more than 50 to 55, even 60% also in some of the cases, depends upon the soil variation of the regional, what we say, from where they have tapped that biomass. So that is also has to be taken care, and then pelletization is to be done, and first torrefaction, and then pelletization, and then the hot pellets are coming out, and then it has to be transported. So in torrefaction, it has to be like uniform heating around 250 to 300 degrees Celsius. That is a uniform heating in the absence of oxygen. And then it is pellet, means generally it's like extrusion by putting extra pressure with the help of binder, because binder plays a very important role for binding that pellets, and then small pellets are coming out. With hot and small, soft pellets, then it is being transported. So in that way, torrefaction is always preferable, and there is one of the important reasons for using torrefaction is the capacity utilization of our coal mill, which has already been designed
for around more than 25, 30 or 35 years before. So that is, and we are increasing because if the thermal share increases, of course, torrefied will be an added advantage with this one. So there are many, many benefits for the stakeholders. What we are doing is, like the pellet manufacturers, it's a new business for the pellet manufacturers actually. They are not, earlier like for thermal power plants I'm saying, but of course, they had been supplied to many processing units or another like industrial processes, but in this power plant, it's a new business. So it's a new and lucrative business, and it's a long-term business. That's what our Honorable Secretary has already claimed, that already the long-term model contract has been issued, which has given a 7-year term, minimum 7-year terms of procurement from the single, depending upon the tender process of that particular person. So it's a good business for this one. In fact, this is an additional business. And then, of course, the farmers, as they are our gods for this crop as well. So these farmers, it's like unutilized waste for so many decades, for so many years it has been vested. So they can earn additional income from this, unutilized waste straw, and of course job opportunities are there. And in fact, by not burning in the open atmosphere, it improves the soil quality also. So yes, because the soil quality because of the heat process, many the many bacteria which are useful for the fertility of the soil, like rhizospharia bacteria and all, they are getting killed, including earthworm, who is called the friend of farmer. So it's like a extra, Okay, fine. I think there is a little bit timing also. It is there. So I would like to see. Okay, I'll go fast. And of course, there is a GENCOs also, our hot favorite. They are doing very good in this. And so what the farmers can take action this today? Like farmers can take action either individually or jointly also by not burning stubble on the field. And also, moreover, they can do FPO formation, like jointly they can do FPO, creation of FPO, 200, 300 farmers come together and creation of FPO they can do, and they can sell their crop directly to the power plant instead of selling to the pellet manufacturers, so they can get more benefit from that one. They can adopt modern methods for harvesting as well, and they can take advantages of government schemes also. So in that one, there are many government schemes which I would like to mention here. There are MSME schemes for cluster development program. There are infrastructure development scheme inside that MSME scheme, who are already having their plants. They can also avail this benefit for the upgradation of their plant. There are Ministry of Agriculture scheme, like submission on agriculture of mechanization. Of course, there is a Prime Minister Employment Generation Program also scheme is there. And moreover, MNRE has launched a scheme which is giving 9 lakhs per TPH with a maximum of 45 lakhs per plant. And of course, CPCB, which is generally basically gives the schemes for the NCR plant region, which is 28 lakhs per TPH and a maximum of around 1.4 crores. So all these exclusive schemes has been set up with the help of Mission Samarth. Mission Samarth has a direct coordination by setting up with the different interministerial coordinations. And of course, nationalized banks are also coming up with this one, because in this sector, I would like to mention here that with the help of Mission Samarth, it has been, this pellet manufacturing has been done in a priority sector lending in coordination with Reserve Bank of India. So this is also a great initiative which we have done it. So some of the initiatives taken by Mission Samarth in the form of technical assistance to GENCOs, then monitoring of various tenders, and of course, identification of labs and certification. We are already in touch with CPRI and NTPC. They are already on behalf of government, they are taking up, because these specifications and the quality of pellets, where to measure. So we are setting up, our government is setting up our own plants in coordination with CPR and NTPC, and in some of the, almost all the NTPC plants, the lab facility is available. And then, of course, there is a ease of doing business, like a customized window clearance we have already set up, so that our pellet manufacturing plants or the FPOs who are eager to set up, they need not have to go anywhere. And of course, training awareness programs, R&D under National Perspective Plan, and all these things are going on by
Mission Samarth. So likewise, with the initiatives of Mission Samarth, as I already told, 42 numbers of power plants are already used biomass in their power plants. And then the total biomass usage is more than 1 lakh metric tons. And of course, still the tender quantity, which is being as on today, up to 20th of March, it is around 1,200 lakh metric tons. It is under progress. It is including short-term and long-term tenders. So likewise, Mission is doing rigorous efforts in carrying out this spreading of the message of the Ministry of Power, Government of India. So we are doing farmers awareness program in that direction. We are doing capacity building program for pellet manufacturers, and we are doing capacity building programs for our GENCOs also. So likewise, we have conducted more than 40 programs in coordination with NPTI. So with that one, we have recently launched, means just today only we have launched a Mission website for interactive platform of all the stakeholders, which where they can interact and take how much, what is the availability and the requirement of this one. So another thing what we have done is, what are the key developments which I would like to mention here. The key developments, already Mission has issued a revised biomass policy, and to all the TPPs, Mission has already a long-term model contract has been issued by Mission Samarth on this occasion, and then already through GEM portal, what we say, this is a customized procurement for biomass through GEM portal, and it is already in the business with the initiatives of Mission Samarth. And of course, identification of pellet manufacturing unit, as I already told, under priority sector lending by RBI. And already we have co-fired 42 numbers in biomass in 42 numbers of thermal power plants. Thereby we have already in biomass co-firing, we have used more than 1 lakh metric tons, and which has reduced almost 1.3 lakh metric tons of carbon footprints in the atmosphere. Or vice versa, we can say that 1.3 lakh metric tons of fresh air has been breathed by our generations till date. So yes, and likewise, we have conducted 40 capacity building programs, reaching almost 5,000 people physically across this country, and then in 17 states in coordination with NPTI. Yes, as Mission Samarth has given very, initiatives by lending financial institutions like MNRE, banks, CPCB for setting up of pellet manufacturing plants, and 12 numbers of national perspective research projects are already under progress, and 8 numbers under DST. So I would like to mention here one more way forward, and in addition to that, I'd like to mention here, last slide it is. Now this is last slide. So with this one, Mission Samarth wants to develop this biomass as a key substitute to coal. And yes, Mission Samarth is doing developing and standardization of collection, aggregation, and storage of this power plant. And then we are developing pellet manufacturing supply chain. And of course, we are doing how to test it. So in this direction, already Mission Samarth with Bureau of Indian Standards, they have issued 12 numbers of IS standards in this direction. And GENCOs are also very good role in tapping this one. So the last but not the least means research domain is already going on in methodology of testing of paddy pellets and the loss of GCV. So with this, friends, I would like to conclude it. So we need all our stakeholders to contribute in this direction. And of course, it will be a clean and green energy for everybody, and so that this generation and the next generation will think of us. Thank you once again. Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, as we are running behind schedule, we would request all our presenters to kindly present their presentations in a brief format. And for the next presentation, we would request them to kindly conclude in about 10 minutes, 10 to 12 minutes each. For the next presentation, we would like to invite Sri Ravi Kaushalji, who has worked in KIOCL, Chikmagalur, Karnataka as production executive. He joined as probationary officer and undertook various assignments in Northeastern Circle of SBI. Presently, he is working in Consultancy Services Cell, Delhi. And today is going to present on financial assistance for biomass sector, a banker's perspective. So let's put our hands together for Sri Ravi Kaushal. स्लाइड यहाँ से मिल जाएगा ना, कैसे चलाएंगे?
इसको इस पर चला दीजिए। हाँ, इस पर चला दीजिए। आ गया उनसे तो यार आगे नहीं और कुछ अच्छा ऐसे ठीक है। इट इज़ कमिंग ना, ठीक है ओके लेट इट। हाँ थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा देखा कि नई चीज़ों को सीखने में बड़ा मुश्किल होता है, उसी तरीके से पोस्ट लंच के बाद में इतने सारे टेक्निकल सेशंस को एब्जॉर्ब करना माइंड के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए और समय सीमा को भी काफ़ी कम कर दिया गया, जो 15 मिनट की चीज़ है उसको 12 मिनट में अभी समेटना पड़ेगा। तो कट शॉर्ट करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ और जिस डिपार्टमेंट से हूँ उसका नाम है कंसल्टेंसी सर्विसेज सेल। तो आप लोगों के माइंड के अंदर पहले एक बैंक का परसेप्शन होगा कि जब हम बैंक में जाते हैं, किसी ब्रांच में जाते हैं, वहाँ कोई आदमी है, उसके पास हम जाते हैं, जैसे ही अप्रोच करते हैं फिर वो लंच करने चला जाता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इस चीज़ में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बैंक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी में से एक हमारा डिपार्टमेंट भी है जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट की शुरुआत, मतलब मेरे जो बैंक है उसकी उम्र करीब 215 साल है, तो उसके अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट है इट इज़ ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड। तो ये कब शुरू हुआ? ये 1970 में शुरू किया गया था। 1969 में हमारे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। जैसे आज हमारे अंबानी और अडानी हैं, उस समय हमारे टाटा बिरला हुआ करते थे और सिर्फ उन्हीं लोगों का अकाउंट बैंक में खुला करता था। जो मासेस था उस समय, हम आज़ादी से कुछ ही साल हुए थे हम लोगों को, और ज़्यादातर लोग, जैसे आज हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप बोल रहे हैं, तो कुछ लोग जो बड़ी हिम्मत करते थे वो आने की कोशिश कर रहे थे उस समय। तो बैंक में ये सोचा गया, क्योंकि बैंक के अंदर क्या है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, और हमारे पास जैसे आज आप देख रहे हैं कि नए नए प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास इथेनॉल है, CBG है, अभी बायोमास पैलेट की बात हो रही है, सोलर की बात हो रही है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप वो बैंक के पास आएगा तो वो एक कॉमन जो ग्रेजुएट है वो कैसे अप्रिशिएट करेगा, कैसे समझ पाएगा उस चीज़ को, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी वजह से 1970 के अंदर करीब 200 इंजीनियर्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट से रिक्रूट किए बैंक ने, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1970 में, जो इस चीज़ को समझ सकें, मतलब जो ऑफिसर है बैंक के वो समझ सकें कि सामने वाला जो प्रपोजल लेके आ रहा है वो किस चीज़ का है, वो क्या करना चाहता है, क्या उसका मार्केट है कि नहीं, उसको कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और वो जैसा वो सोच रहा है कि भाई मेरा 6 या 7 साल में IRR आएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों को असेस करने के लिए उन्होंने इंडक्ट किया। तो दिस इज़ द डिपार्टमेंट आई एम फ्रॉम। और बायोमास पैलेट के ऊपर मैं आऊँगा, और ये मेरे डिपार्टमेंट का बैकग्राउंड था। उसके बाद मैं कहूँगा दिस इज़ द जर्नी कि 1950 से हम लोग किस तरीके से 1950, 60, 70, 80 और आज हम 2023 में खड़े हुए हैं। ये जर्नी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, कि ऐसा नहीं है ये अभी सोचा है इसके बारे में, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में, क्योंकि उस समय चैलेंजेस अलग अलग थे, हर दशक में अलग अलग चैलेंजेस आए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने 60-70 की बात करी, जब हमारा डिपार्टमेंट का जो जन्म हुआ, उसके बाद हमने क्या किया कि क्वालिटी सपोर्ट टीम की, हम 90s की बात करेंगे, उस समय क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं हुआ करता था, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी सर्कल्स, उसको फोकस करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई। हम नए मिलेनियम में जब गए तो आज हम बात कर रहे हैं Z सर्टिफिकेशन, वो चीज़ इंक्लूड हुआ। और स्टार्टअप की हम बात करें, अभी बहुत सारी चीज़ आपने सुना होगा, यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स की बहुत सारी बात कर रही है। तो हमने अपनी ब्रांचेस के अलावा एक स्पेशलाइज स्टार्टअप ब्रांच भी बनाई है जो हमारी गुड़गांव में है, वो सिर्फ हमारी स्टार्टअप की फंडिंग करती है। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं स्टेट बैंक्स के। अब इसके अलावा हम कहते हैं कि फिगर्स की कुछ बात कर लें। 3 तरह की हमारे पास स्टार्टअप्स की स्कीम है, मुद्रा लोन है, CGT MSC है और स्टैंड अप इंडिया है। अब तक 28 फरवरी तक हमारा जो SME में जो हमारा फंडिंग है या एडवांसेस हमने जो दे रखे हैं वो करीब 3,33,636 करोड़ हमने कर रखा है। मुद्रा लोन जैसे कहते हैं कि बच्चा जब शुरू करता है चलने के लिए तो सबसे पहला कदम लेता है और सबसे छोटा होता है वो, तो उसी तरीके से बिजनेस भी होते हैं, जो सब पहला कदम होता है वो बहुत छोटा होता है। तो उसी तरीके से जो मुद्रा लोन है वो सबसे छोटा लोन है, 10 लाख तक का लोन है जो हमने डिसबर्स किया है। इसमें मेरे ख्याल से हमने करीब 20,86,000 बेनिफिशियरी को करीब 27,828 करोड़ डिसबर्स कर रखा है।
ये फिगर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये अचीवमेंट है, ये फिगर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको एक आश्वासन देते हैं। कई बार का क्या है कि माइंड में हमारे परसेप्शन आ जाता है कि मैं इधर ब्रांच में गया, एप्लीकेशन मुझे बिठाए रखा और मेरे को लोन नहीं दिया। लेकिन ये जितने फिगर्स हैं दे कैन नॉट लाई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका लोन नहीं होता। मेन उसका रीज़न है दैट इज़ द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो मैं कई बारी अपने अलग अलग सेमिनार्स में और वर्कशॉप्स में जाके बोलता हूँ, तो कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को कि अरे भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हर फोरम में बोलते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप इसको सही तरह से नहीं दे रहे। और कम्युनिकेशन हाउ कुड बी डी द बिगेस्ट प्रॉब्लम। का सब फंडिंग की बात करते हैं कि भाई हमारी स्कीम ठप के है, एंटरप्रेन्योर पैसा लगाना चाहता है, देश उसके लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम फंडिंग की है। लेकिन मेन थिंग इज़ द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कि जो एंटरप्रेन्योर का जो कंसेप्ट है, जो उसका ड्रीम है, उसको वो सही तरीके से शब्दों में नहीं ला पाता प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, और बैंक का ऑफिसर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो ऑफिसर है उस चीज़ को समझ नहीं पाता। अदरवाइज बैंक्स आर देयर फॉर लैंडिंग ओनली, वो उनकी इनकम है, एक्सपेंस नहीं। एक्सपेंस तो डिपॉजिट्स हैं जो 5 साल के लिए 2 साल के लिए लोग उनके पास रखते हैं। दूसरा हमारा CGT MSE लोन है, जो कि जिसके अंदर कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 करोड़ तक का लोन है। इसके अंदर करीब 78,540 डिसबर्स हो गए हैं, 11,891 करोड़। और स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मतलब कि हम जो समाज के दूसरे सेक्शन, हम डेवलपमेंटल बैंकिंग भी करते हैं। इसमें क्या है कि जो SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। इसके अंदर करीब हमने 14,966 लोगों को 2,114 करोड़ डिसबर्स कर दिया है, ताकि वो अपने नए वेंचर्स, और ये सारे ग्रीन फील्ड हैं। माइंड इट, ग्रीन फील्ड फाइनेंसिंग सबसे मुश्किल होती है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें, अगर फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स वो एग्जिस्टिंग जितनी चीज़ें उनको फंडिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चलती हुई चीज़ है, उसको समझना आसान है। मुश्किल क्या होता है, कोई नई चीज़, अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको मालूम नहीं वो मशीन चलेगी कि नहीं चलेगी, आपको मालूम नहीं कि आज उसकी मार्केट अगले 3 साल या 5 साल में कैसा बिहेव करेगी, आपको कुछ मालूम नहीं। तो ये चीज़ जो है दैट वी आर डूइंग एंड वी आर फाइनेंसिंग आल्सो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इट रियली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द GDP नंबर एंड मेकिंग योर कंट्री टू ग्रो फास्टर। तो ये जैसे मैंने अपने डिपार्टमेंट का बारे में बताया, उसमें दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डन। और एक सबसे अच्छी चीज़, हम लोग टोटल हम लोग पैन इंडिया जो हमारा बैंक है वो करीब 17 सर्कल्स हैं। अभी हम लोग दिल्ली सर्कल में खड़े हुए हैं। इसके अंदर हमारी दिल्ली, पूरा उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, मुजफ्फरनगर और मेरठ का हिस्सा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे इसमें क्या है कि एक करीब 10 साल हो गए हमने एक SME फैसिलिटेशन सेंटर भी है, जो इसके अंदर हम लोग उसको चलाते हैं। क्योंकि हम ये पाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर आता है, उसको हैंड होल्डिंग की। उसको ये बताने वाला नहीं होता कोई कि भाई आपको ये सारे अप्रूवल चाहिए जो आपको ज़रूरत है। अप्रूवल्स मीन्स ये रूल्स रेगुलेशन है इस गेम के। कोई ये बताने वाला नहीं होता कि भाई आपको मशीन ये वाली चाहिए। दुनिया भर के उसको 4 कोटेशन तो मिल जाएंगे, लेकिन 4 कोटेशन में मशीन महंगी वाली अच्छी है या सस्ती वाली अच्छी है, ये बताने वाला कोई नहीं होता। और दूसरा, उसको साइजिंग बताने के लिए कोई नहीं होता कि भाई उसने प्लांट तो लगा लिया, वो प्लांट मुझको 30 TPD का लगाना है, 100 TPD का लगाना है या 200 TPD का लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैंड होल्डिंग के लिए हमारा SME फैसिलिटेशन सेंटर है, जिसके अंदर जो पिछले ये सिर्फ हमारे दिल्ली सर्कल में फंक्शन कर रहा है, और इसके अंडर हमने पिछले 10 साल में करीब 2000 एंटरप्रेन्योर्स फैसिलिटेट किए हैं, अमाउंटिंग अराउंड 20,000 करोड़। बायोमास और फ्यूल की हम बात करें तो बाकी दूसरी पॉलिसी जिसको हम फंडिंग कर रहे हैं ये उसके बारे में है। इथेनॉल, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इथेनॉल जो है वो फाइनेंसिंग भी हम लोग कर रहे हैं। इथेनॉल जो कि 2 चीज़ों से बनाया जाता है, या तो मोलासेस जो है जो गन्ने का बस्ता है उससे भी बन जाता है, और दूसरा ग्रेन से भी बन जाता है। तो इथेनॉल के लिए हमारी फाइनेंसिंग अलग से है। इसके अंदर हमारी बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम थी जिसमें सिर्फ 5% मार्जिन आपको लेके आने की ज़रूरत थी, और 95% जो है वो बैंक फंडिंग करेगा। ये बहुत रेयर है, लेकिन इसमें कंडीशन ये थी कि आपका ऑफटेक एग्रीमेंट जो है किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि IOCL, HPCL या BPCL के साथ में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कंप्रेस बायोगैस, ये भी हमारा एक बायोफ्यूल बेस्ड है। CBG के अंदर अभी कोई भी, बहुत ही कम लोग हाथ डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्विंग है। ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोपियन कंट्री में सालों से चली आ रही है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है दे आर वेरी वेरी हाई। लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्योंकि लोअर लेवल पे आनी है, हमारे यहाँ पे हम इसको CBG जो प्रोड्यूस करेंगे, जो इसमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा CBG होगा, जो कि हमारी CNG को सब्सिट्यूट करेगा। और CNG का जो रेट है करीब अभी 70 रुपये 80 रुपये किलो इतना चल रहा है।
तो उस इकोनॉमीज़ को अपने इंडिया में बैठाने के लिए देयर आर चैलेंजेस। तो मेरे ख्याल से अभी हमने इसमें एक इंडस्ट्री स्टडी करी थी, इंडस्ट्री स्टडी करना भी हमारे डिपार्टमेंट का रूल है। तो करीब इसमें 40 प्लांट जो भी लगे हुए हैं, तो 40 में से करीब 23 या 24 जो प्लांट हैं वो प्रेस मड पे बेस्ड लगे हुए हैं, प्रेस मड और गोबर पे बेस्ड। इसमें भी बायोमास में धीरे धीरे लोग जा रहे हैं बिकॉज देयर आर चैलेंजेस इन दैट। उसके अलावा बायोमास पैलेट पे हम लोग आएंगे बिकॉज जिसके लिए हम जो नेशनल कन्वेंशन जिसमें है, तो हमारे बैंक में क्या हुआ आज एग्जैक्टली एक चीज़ को 3 साल हो गए। कोई बता सकता है किस चीज़ को? हमारे लॉकडाउन को। तो हम लोग जो थे, इनफैक्ट मैं, क्योंकि मेरे पास एक नया प्रपोजल आया था जिसके अंदर बायोमास पैलेट का, उस समय हमारे दादरी प्लांट, जैसे हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी बात कर रहे थे, जब ये शुरुआत हुई तो एनटीपीसी दादरी वाज द प्लांट जहाँ पे शुरुआत की गई थी। और मेन प्रॉब्लम थी हमारे उत्तर भारत में, आपने देखा होगा हमेशा नवंबर दिसंबर जो होता है इतना सारा सफोकेटिंग होता है बहुत। क्यों? क्योंकि वहाँ से पराली जलाई जाती है। और इसको सॉल्यूशन के लिए वो एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर एनटीपीसी दादरी प्लांट चुना गया, जहाँ पे सोचा गया कि बायोमास के हम पैलेट बना के उसको कंडेंस करके 5% मिक्सिंग करके हम अपने पैलेट में उसको मिलाएं। तो उस समय हम लोग इसके साथ में जुड़ रहे थे। आई वेंट टू एनटीपीसी, आई वाज डिस्कसिंग विद देयर ऑफिसर्स एंड दे वर वेरी कॉर्डियल। उनको भी अच्छा लगा कि नहीं, बैंक की तरफ से कोई इस चीज़ को समझने आया है। तो उसके बाद बीच में लॉकडाउन आ गया, 3 साल अभी हम लोगों को हो गए हैं, लेकिन फिर भी वी केप्ट ऑन डूइंग द वर्क। एनटीपीसी अपना काम करता रहा, मिनिस्ट्री अपनी काम करती रही, और उसी तरीके से 29 जनवरी 2021 में ये हमने बायोमास पॉलिसी निकाली, जिसके अंडर में हमने बायोमास पैलेट को भी इंक्लूड किया कि अगर कोई अपना प्लांट बायोमास पैलेट का डालना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है उसके अंदर में, तो एटलीस्ट हमारे पास एक पॉलिसी हो, एक स्कीम हो जिसके अंडर हम उसको फिनेंसिंग कर सकें। तो ये जो हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी है बेसिकली बायोमास पैलेट के लिए तो है ही, लेकिन ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है कि हमारी जो सीबीजी जो कि सतत में आती है, अगर कोई उसके अंदर की बिकॉज ऑफ एनी रीज़न एक्सक्लूड हो जाता है तो वो हम इसको सीबीजी प्लांट को फाइनेंस कर सकते हैं। इथेनॉल प्लांट हमारा जो रेगुलर स्कीम में अगर 5% मार्जिन वो नहीं ला पाता, 25% या 30% लाता है, तो उसको भी हम लोग इसी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बायोमास पैलेट पॉलिसी, उसके अंदर क्या है कि जैसे आप अपना छोटे से छोटा प्लांट अगर आप डालेंगे तो 30 टीपीडी का आप प्लांट डाल सकते हैं। तो 30 टीपीडी का जो प्लांट का जो कॉस्ट आता है करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया आता है। तो इसमें क्या है कि एक फीचर आप देखिएगा, क्वांटम ऑफ लोन इज 70% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। 70% इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 2 करोड़ रुपया है, तो बैंक आपको उसका 70% यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपया लोन दे देगा। व्हाट अबाउट द 60 लाख? 60 लाख जो है वो प्रोमोटर को अपना कंट्रीब्यूशन लाना होगा। दिस इज कॉल्ड द क्वांटम ऑफ लोन। दिस इज रिगार्डिंग द टर्म लोन। उसको टर्म लोन दिया जाएगा। 2 तरीके से बैंक फाइनेंस करता है, एक तो टर्म लोन दिया जाता है जो कि फिक्स असेट के लिए जाता है, और एक वर्किंग कैपिटल दिया जाता है जो उसको करंट असेट, जैसे मान लीजिए उसका स्टॉक, इस केस में जो फीड स्टॉक के लिए जो दिया जाएगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें तो ये 10.90 से लेके 14.75% है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कि अभी 4-5 महीने में अभी इंक्रीज़ हुआ है, उस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका अभी थोड़ा ज़्यादा है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर 30 से लेकर 60 टीपीडी का आप प्लांट ले रहे हैं तो आपका 2 या 3 करोड़ के अंदर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका लोन जो है वो 2 करोड़ तक अगर आपका कंपोनेंट आएगा तो वो सीजीटी एमएससी में कवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपका 2 करोड़ का उसमें लोन हो जाता है। तो ज़्यादातर प्लांट जो कि 30 या 60 टीपीडी के हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम में जाना, 100 टीपीडी में जाना भी, जैसे हमने देखा अपने एक्सपीरियंस से भी और कई प्रपोजल हम लोगों ने करे तो देखा कि चैलेंजेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि हमने अपने थर्मल पावर प्लांट्स भी हमने करे हैं, तो उसके अंदर पहले क्या था कि एक कैचमेंट एरिया, इसीलिए कई बार हमारे जो रेगुलर सेमिनार्स हुए उसमें हमने मिनिस्ट्री को भी हमने सजेशन दिया कि जिस तरीके से हमने थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कैचमेंट एरिया होता है उसी तरीके से कैचमेंट एरिया इसमें बनाया जाए, अदरवाइज इट विल बी वेरी मुश्किल। नहीं तो क्या होगा कि बायोमास आज जो 2 रुपया 2.5 रुपया किलो मिल रहा है वो 7 या 8 रुपये किलो अगर वो चला जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी या मान लीजिए किसी दूसरी चीज़ को आप दे रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस फिक्स है, तो दैट विल बी ए प्रॉब्लम। सो दीज आर द थिंग्स। तो मार्जिन वर्किंग कैपिटल में 25% होगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर रीपेमेंट पीरियड इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, तो जो आपके ऊपर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो बर्डन है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप के लिए, वो बहुत कम होगा। तो ब्रॉडली
ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए अगर 2 करोड़ से ज़्यादा भी अगर वो चला जाता है, कोलेटरल सिक्योरिटी का ज़रूरत भी अगर उसको अगर पड़ता है, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी छूट सकती है अगर आपके पास लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट है। जैसे मान लीजिए एनटीपीसी के साथ में जो बात हो रही थी कि पहले 6 महीना या 1 साल के लिए होता था, 7 साल के लिए टाई अप है। तो जहाँ वो इंश्योर हो गया बैंकों की 7 साल के लिए इसका एग्रीमेंट है, मतलब उसको अपनी सेल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सेल्स की, तो उस केस में वो कोलेटरल सिक्योरिटी और दूसरे कंसेशन भी इसमें मिल जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं बायोफ्यूल पॉलिसी के बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और नाउ व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम द प्रोमोटर और द एंटरप्रेन्योर साइड इज कि आपका जो भी आइडिया या जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं उसको नॉट ब्रीफली 3 से 4 पेज के अंदर में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि प्रोमोटर कौन है, किस तरह के मशीन ले रहे हैं, क्या आपका फील्ड स्टॉक है, कैसे उसको मैनेज करेंगे लाके, एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और कैसे हाउ यू आर गोइंग टू रीपे इट। ये 3 या 4 पेज का अगर आप कंसाइज रूप में उसको लिख के ले आएंगे तो आई डोंट थिंक वेदर इट इज़ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो गई। विद दिस आई कंक्लूड माई सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। Thank you very much indeed, sir. And we now invite for the last presentation of this session, Sri Prasad Daputeji. And he is a founder and MD of Varhat Capital Private and chairman of IIMV Field Vishakhapatnam Limited. He is working for the farmer and artisans across India and has mobilized more than 3 lakh farmers across central India and northeast India through promotion of more than 30 FPOs that were funded by Varhat Capital. And ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our eminent speaker, as I request you, sir, to kindly conclude in 10 minutes. Oh, this one? Oh, you are done. Good afternoon. Just feeling lazy, so I'll be a little fast. We'll just cover how big this market is going to be. In case I move away a little from this mic, then just remind me that you will be missing me. Mission Samarth is a very big opportunity on biomass, which everybody knows. We will look into the 3 segments, out of which 2 are really working right now, and the third one is Samarth, which is a regulated one. And this is going to be the biggest chunk of this. So going forward, Samarth could be driving as much as the 55% of the demand of the total biomass or biocoal market. This is what we do. We have also advised one of the startup, GK91 Digital Private Limited, in their bids for NTPC up to 2,200 tons per day. So that is what we do as a transaction advisor. So technology landscape, I think this is already covered by someone. But in torrefied pellets, I can say that whatever I have seen so far, the Nishan Bioenergy's technology looks to be the cheapest in the world and looks pretty reliable, as we have seen their running operations for more than 4 or 5 hours. This is the overall Indian biocoal market. So how big is this now? This is roughly 7.5 million tons. And how it is going to be? It is going to be 158 million tons by 2032. So this market is going to be 2.5 trillion rupees, or roughly 2,43,000 crore by 2032. And this is largely because of net zero and Mission Samarth. So if you see, what is driving right now the biomass briquette market is purely fossil fuel replacement. The first of all, the companies like you have seen that the briquettes were procured by the thermal companies who replaced their LPG furnaces and the oil furnaces with the briquette furnaces. So that is the first one which came in.
as LPG moved from 75 rupees per kilo commercial to 115 rupees per kilo, and diesel moved from 65 rupees per liter, again it should be talked in kilos, but that's not the convenient thing, to something like 100 rupees per liter, and then now it has settled around 92 rupees per liter. This fossil fuel replacement demand is growing the fastest. Even this year, like a lot of people are complaining that they are not getting briquette. This is largely because of this market. This market is doing pretty good, and this is the largest growth market this year. This could be growing from roughly 4,000 crore to 5,100 crore in 2023, and this is a very big growth. If you see the second one is a net zero obligation market, you see that most of the multinationals are setting dedicated briquette plants, definitely through the third-party operators who are supplying steam to them rather than supplying briquettes. So these markets like the PepsiCo, Kellogg, and all multinational companies, their national obligation for net zero might be 2050, but quite a few multinationals who need to win consumers with their net zero carbon footprint or as small carbon footprint as possible, they are voluntarily entering this market. This is largely a voluntary market, but they are getting into, in this way, very big way. So this was something like 1.5 million tons. This is also largely a briquette market rather than a pellet market. This could be as big as doubling up this year. So this market has gone up significantly this year. So if you see the uptick in briquette prices as well as the non-tariffied pellet prices significantly this year, we won't be surprised. And the third one is a compulsory market, which is the Samarth and CAQM market. As we have seen in our earlier presentation in Taj Chandigarh in the same conference, we saw that CAQM making it compulsory. And CAQM driving roughly 2 million tons of biocoal market in NCR area, the Delhi market, and 20 districts around Delhi. So this is going to be very big. If you see that this year it was not there much, we see this on the pellet side, it should be something like Samarth, and this will be very small, something like 210,000 tons. This is because these long-term contracts are not going to be actionable this year, but this could be actionable next year onwards when the contract. So this grows by 10 times next year to 2.3 million tons, and again it grows 6 times to 13.8 million tons. So this is something a big jump, and again it grows 3 times to 2026, when India will try to move, and the thermal power plants, which could be facing a lot of heat, they will be trying to comply with their 5% compliance. So we have seen in 26-27, the thermal power stations in India will try to comply with the 5% of their coal replacement with the biocoal. Now, within this, what is going to drive this is torrefied pellets in a big way in 26-27 onwards, when the torrefied technology is going to stabilize. And why that will happen is the torrefied technology takes any type of biomass. It's not very choosy technology. And it can be produced all across the year, so monsoon doesn't stop manufacturing of torrefied pellets. So that is something which will be shaking up the compulsory market, which is the Samarth and CAQM market. CAQM is right now operating only in NCR, but other metropolitan areas, it could be actionable very soon, as the air quality in Mumbai was worse than Delhi for more than 22 days this time. So these are the risks which are involved in setting up biomass, biocoal projects: demand risk, interest and inflation risk, political risk. Political risk is actually becoming very favorable right now. So demand risk also, if someone signs 7-year contract with NTPC or any other thermal power plant, the demand risk is mitigated significantly. Credit enhancement, I think sometimes banks ask for the project management consultant, or sometimes you need to bring, escrow account is there, but you need to bring in a lot of cash upfront, or you need to give good amount of collateral.
So that is what the credit enhancement banks would be asking for, because the sector is going to. Technology risk and design risk or production risk, now the technology has matured to some extent, so these are not the risks that could be driving it in a big way. Biomass collection risk, definitely this is the biggest risk, because biomass is the secret of biocoal energy. So, this slide. Biomass risk, this is the biggest risk which could be mitigated through the FPO and working with the farmers directly. FPO is nothing but a village level aggregation kind of mechanism. Instead of being individualistic, it is more of a, you can say, the community-based organization. So generally it works good. There are a lot of FPOs which are purely private, so at that time it is as good as a village level aggregator. So we have done one model of 100 TPD biocoal plant for NTPC's 7-year contract. These are some of the things which can talk. Although you get a long-term offtake agreement with NTPC or any other generation company, you can also do some of the spot and short-term trading through the fossil fuel replacement and net zero obligation markets. That could be something which could be enhancing your return on equity. This is how the markets looks like. This is the briquette market, which is going to grow till 2031, and thereafter it will decline, because as the furnace size becomes the constraint, people will move more and more to the briquettes, from briquettes to the pellets. Largely this mitigation will move to the non-torrefied pellets initially, and then they will move gradually to torrefied pellets. This is the non-torrefied pellet market. This is also going to mature by 2031. This largely will be driven by Samarth in initial years, and thereafter it matures because the net zero, where the plants of food processing and pharmaceutical companies are in areas where size is the constraint. So they would be moving from briquettes to the pellets in a big way. And then this is a torrefied market. Torrefied market will be purely driven by Mission Samarth. And since this takes all types of biomasses, this will grow. And this is going to be the fastest growing market 2025 onwards. And this segment could be commanding as much as 55% of the market share by 2032 of the total, because this technology will become very affordable. This will be the 12-month kind of running operation. And that anybody who signs those 24/7 kind of contracts with the NTPC for 7 years, so the supplying during the monsoon months is going to be the big challenge, and that is going to be taken care of by the torrefied pellet technology. And second thing, the diversity comes. Any type of biomass is acceptable in torrefied technology, and that works pretty good for this. And the last, this is how the overall biocoal market grows. Is a 158.74 million tons, which we see by 2032, from currently 7.57 tons, so which is becomes something like 20 times in next 10 years. And this market, as the prices are going to grow significantly, it will be 243,000 crores or 2.43 trillion rupees, as you'd like to see. Thank you very much for your attention. So the questions we'll take now, or? Thank you very much indeed for that wonderful presentation. I would now invite Shri D.K. Srivastavaji, Chief Engineer, TETDCA, to kindly say a few words. धन्यवाद। मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं धीरज कुमार श्रीवास्तव, आई एम ए चीफ इंजीनियर इन सेंट्रल सिटी अथॉरिटी। आज बड़ा हर्ष का समय लग रहा है मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बट आज से ठीक 2 साल पहले मंत्रालय से एक आदेश आया कि एक कंसेप्ट नोट बनाना है
और इसको फायरिंग को जो 2017 से हम शुरू किया है, इसको मिशन मोड पे ले जाना है। तो मेरे द्वारा एक जो टीम थी इस काम पे लग गई और लगभग 1 महीने के अंदर, आज ठीक इसी मार्च 2021 को ये मूव किए थे। और उस समय कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे मिशन को बनाना है, बट द मिशन को जिस शेप में हमने दिया, आज बड़ी खुशी है कि वो मिशन उस शेप में बहुत बढ़िया से प्रोग्रेस कर रहा है। एंड वेरी हैप्पी टू सी कि थिंग्स आर ग्रोइंग। उसमें हम ये सोचे भी नहीं थे कि इतना बढ़िया मूव करेगा, एंड द रिजल्ट्स आर शोइंग वेरी हैप्पी टू मी। तो इसके लिए मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, खास करके जो पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं, जिस तरह से आगे आ रहे हैं, उसको भी देख के बड़ी हर्ष होता है, बड़ा प्रसन्नता होता है। साथ में एक काम मेरे पास और भी है, क्योंकि इस पॉलिसी में लिखा है कि सारे पावर प्लांट्स को मैंडेटरली को-फायर करना है 5 से 7%। तो उसमें ऐसा संभव नहीं हो पाता है कई बार, कई पावर प्लांट्स में मिलिंग की समस्या है, कुछ समस्या है। सो आई एम लीडिंग वन टीम विच कंप्राइजिंग ऑफ NTPC, BHEL, CPRI आल्सो। तो उन पावर प्लांटों को एग्जाम्पशन भी देने का काम है। उसमें हमारे पास कई एप्लीकेशंस भी आते हैं। तो कोई जेनको अगर बैठे हैं, उनको कोई समस्या है, सो इन दैट पॉलिसी देयर इज अ कंड्यूट टू गेट द एग्जाम्पशन आल्सो। तो ये आपको सूचित भी करना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उस चीज़ को भी सोच लिया था कि कैसे एक यूनिफॉर्म वे में सबको डील किया जाए, क्योंकि जेनकोस के अलग अलग प्लांट होंगे। तो एक लेवल प्लेइंग देने के लिए ऐसा ना हो कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया। सो वी प्रिपेयर्ड वन गाइडलाइन। उस गाइडलाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी कैसे जो है हर प्लांट को एग्जाम्पशन देना है। तो उसमें अभी भी बहुत सारे प्लांट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको OEM से ज़रूर बात करके ही ले आना है। तो अभी गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है, आप जितने भी जेनकोस अगर बैठे हैं तो गाइडलाइन को दोबारा पढ़ लें। सो इन ज़्यादा शब्दों के साथ मैं नहीं रहूँगा और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और आगे जो भी है आप जरूर बताइए किसी को कुछ है तो। Thank you very much indeed, sir. I would request Srivastava sir to kindly stay back on the stage. सर आपसे निवेदन है कृपया मंच पर दोबारा पधारें, जिससे कि हम अपने सभी स्पीकर्स को सम्मान दे सकें. We would now like to felicitate our speakers. I would request Sri D.K. Srivastava sir to honor our eminent speakers from the first session. Sri Ajay Kumar Sutrakar ji. May I invite Sri Ajay Kumar Sutrakar. I invite Sri Vivek Singhal, NTPC Delhi, Dadri, sorry. Please put your hands together for him. I invite Mr. Dongre. I invite Mr. Manish Kapoor. Sir, please come. It's okay. You can tell me. I invite Mr. Ravi Kaushal and Mr. Prashad Dhapute. Ladies and gentlemen, please put your hands together for all our eminent speakers. Mr. Dhapure, to kindly accept a small memento.
So ladies and gentlemen, before we move on, and Mr. Ravi Kaushal. Thank you, Srivastava sir, for doing the honors. So ladies and gentlemen, before we move on to the next session, I have few announcements to make. First and foremost, we would request everybody to register and fill in the registration form. I hope you all have done that. आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब कृपया registration form ज़रूर भरें. धन्यवाद सर, thank you. और उसके साथ साथ feedback forms जो आप सबको delegate kit में दिए गए हैं, feedback forms कृपया करके भरें. और आप कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद घर जाने से पहले अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे, तब आपको एक वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू. आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो आपको घर जाते हुए हैंड ओवर करा जाएगा आफ्टर द कॉन्फ्रेंस इज़ ओवर, व्हेन यू विल हैंड ओवर द फीडबैक फॉर्म. And Mr. Nag to kindly felicitate Srivastava sir. Thank you very much indeed, sir. And also, ladies and gentlemen, we have been informed that we have to vacate the hall by 5:30, so we would like to rush up on the next presentations coming up. Thank you very much indeed, sir. Thank you, sir. And for the next session, may I invite on stage Shri Avdesh Kumar Yadav, Chief Engineer, CERC. Kindly join us on the stage, sir. Inviting Mr. Mukesh Patel, Satyajit, from Renewable Energy. Inviting Mr. Sandeep Sharma, Earthwood Private Limited, and Mr. Pavan Kumar, CNH Industrial India Private Limited. We have with us our chair for the session, Shri Avdesh Kumar Yadav. Also inviting our eminent speakers, Mr. Mukesh Patel, Mr. Sandeep Sharma, and Mr. Pavan Kumar. I would request our speakers to kindly take their seats. So, ladies and gentlemen, for the first presentation, I would like to invite So, ladies and gentlemen, the first presentation is by Mr. Mukesh Patel. He is the director at Satyajit Renewable Engineering Private Limited and having 20 years of experience in biomass, pellet and briquette manufacturing sector. Let's put our hands together to welcome Shri Mukesh Patel ji for his presentation. I would like to remind all our eminent speakers to kindly conclude their presentations in 10 minutes each. Thank you. धन्यवाद. मैं ज़्यादा समय न लेते हुए विषय से ही शुरुआत करूंगा. आप सभी को नमस्कार. हमारा ये सत्यजित रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड मशीन मैन्युफैक्चरिंग करता है, पैलेट मैन्युफैक्चरिंग का, और साथ में हम संजय बायोफ्यूल में पैलेट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं. और मुझे ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है, और गवर्नमेंट भी ये इनिशिएटिव लिया और ये कार्य कर रही है. उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट को भी और मिशन बायोमास, मिनिस्ट्री पावर और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये कार्य को इस मुकाम तक लाए. उसके लिए खूब खूब मैं बधाई देता हूं. मैं मेरे विषय से आपको अवगत कराता हूं कि ये सत्यजित रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हमने ये क्यों शुरुआत की, क्योंकि हम
पैलेट मैन्युफैक्चरिंग जो अभी तक की जो भी पद्धति थी, जो कार्य था, जो इतना कॉस्टली था, जो हमारे पावर इंडस्ट्रीज़ के लिए वायबल नहीं था प्रोडक्शन कॉस्ट में, इसलिए हमने कॉस्ट कटिंग करते हुए ये पैलेट टेक्नोलॉजी हमने बनाई है। और चीपेस्ट प्रोडक्शन पैलेट प्रोडक्शन कैसे हो उसका एक एक करके मैं सारा आपको यहाँ से बताऊँगा। जो कि 20 से 25 साल का हमें एक्सपीरियंस होने की वजह से इसमें जो भी समस्याएं आती थी पैलेट प्रोडक्शन में, प्रोक्योरमेंट में और टेक्नोलॉजी में और मार्केट में भी, उसको भी हमने लोकेट करते हुए मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। उसमें सबसे बढ़कर जो थी वो टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी को सिंक्रोनाइज करते हुए कैसे प्रोडक्शन बनाया जाए और सबसे चीपेस्ट पैलेट प्रोडक्शन किया जाए, वो हमारी टेक्नोलॉजी से यही हमने पाया। और आज हम उसी टेक्नोलॉजी से पैलेट बना के एनटीपीसी को भी सप्लाई करते हैं और मार्केट में भी मैं सप्लाई कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम पैलेट बना रहे हैं उसके पहले जो एनटीपीसी को दे रहे हैं उसके पहले भी हम मार्केट को भी देते थे, आज भी हम मार्केट में दे रहे हैं। मार्केट में की भी बहुत डिमांड है पावर कंपनी के साथ साथ भी। हाँ, साथ में अभी जो समर्थ मिशन ने इतना अवेयरनेस किया है उसकी वजह से पावर प्लांट की भी डिमांड आई है, लेकिन जितना पावर प्लांट की डिमांड आनी चाहिए उतना अभी हम नहीं देख रहे हैं। अब इसमें तो आ गया, इसमें आ गया। जब तक मेरा प्रेजेंटेशन चालू होता है तब तक मैं आपको मेरा दो सब्जेक्ट है, एक पैलेट टेक्नोलॉजी, पैलेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेस। तो मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ। वैसे जब तक प्रेजेंटेशन चालू नहीं होता है, वैसे इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है मैं आपको बताऊँ तो, लेकिन चूँकि हमारी जानकारी में नहीं होता है इसलिए हमें वो चैलेंजेस लगता है। बाद में क्वेश्चन आंसर होगा, उसमें जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो वो पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। बाकी कोई चैलेंजेस नहीं है। हाँ, जो ज़्यादा चैलेंजेस लगता है वो हमें अभी इंडस्ट्रीज़ को भी और मार्केट को भी हमें देखने को मिलता है। वो मेनली है, एक तो पैलेट मिल क्यों नहीं रहा है, और दूसरा है जो पैलेट मैन्युफैक्चरर है उनको बायोमास प्रोक्यूरमेंट का लगता है। अधिकतर मैंने देखा है, मैं भी मिनिस्ट्री में काफ़ी बार काफ़ी मीटिंगों में गया हूँ, वहाँ पर भी ये बात कहते हैं इंडस्ट्रीज़ वाले कि और मेरी ही इंडस्ट्रीज़ के हैं कि बायोमास अवेलेबल नहीं है, बायोमास नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, और यहाँ जो भी पावर सेक्टर से हैं उनको भी मैं कहता हूँ, सर हमारे देश में बायोमास की कोई कमी नहीं है, समस्या है हमें उस तक पहुँचने की। तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं तब तक बायोमास हमें दिखेगा नहीं। बाकी बायोमास की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में बायोमास है। हमारे पूरे भारत में गांव-गांव में इंटीरियर कहीं भी जाए बायोमास दिखेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं भी अनऑफिशियली आंकड़े हैं लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ क्योंकि मैं किसान भी हूँ साथ साथ में, मैन्युफैक्चरर के साथ में, और 20 साल का तजुर्बा रखता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जो सरकार के आंकड़े हैं कि हमें 22 से 23 करोड़ टन बायोमास हमारा एक्सेस है हर साल भारत में। लेकिन ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में जो है बायोमास उसको ही हम काउंट करते हैं। बायोमास 2 खेत की बीच की मेड़ है, उसका हमने काउंटिंग नहीं किया है। जैसे ही किसानों को और ग्रामीणों को इसके रेट अच्छे मिलेंगे, या तो उसको प्रोक्यूर करने, या तो उसको शेडिंग करके, कटिंग करके, और पूरे दिन में अपनी आय जितनी करनी हो उतनी उनको अगर रोजगारी मिल जाएगी तो दोनों खेत की मेड़ के बीच का बायोमास है वो भी आ सकता है। पेड़ की हर साल कटिंग छटिंग करते, कटाई छटाई, क्योंकि नहीं तो आंधी तूफान जब बरसात में आता है तो पेड़ अगर भारी होता है, वजन वाला होता है, हैवी, तो गिरने की संभावना रहती है। तो किसान क्या करता है, जो अपने खेतों में पेड़ होते हैं उसकी कटिंग करता है, कटाई करता है। वो कटाई छटाई का भी बायोमास आ सकता है। जो वेस्ट लैंड सरकारी लैंड पड़ी है उसका भी बायोमास आ सकता है। रोड की साइडें हैं, हमारी नदी नाले हैं उसकी साइडें हैं, उसका भी बायोमास हमें मिल सकता है। बायोमास बहुत यूज़ मात्रा में मिल सकता है, बायोमास तक पहुंचने की आवश्यकता है। और
अंदर दूर दराज के जो खेत है वहाँ तक, और या तो छोटे छोटे खेत है या तो जैसे 1 बीघा है, 2 बीघा है, 1-2 एकड़ है, वो बायोमास अभी भी कलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उस बायोमास को कलेक्शन करके और ट्रैक्टरों से और ट्रॉलियों से फैक्ट्री तक पहुंचाने में उनको उतना जो एनर्जी या तो उसको इतना पैसा नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए, इसलिए भी वो बायोमास नहीं मिल सकता है क्योंकि रेट की वजह से। तो ये हम कतई न माने कि हमारे पास बायोमास या तो पैलेट हमें नहीं मिल रहा है इसलिए बायोमास अवेलेबल नहीं है। बायोमास खूब है। अब जो पैलेट नहीं मिल रहा है ये भी शिकायत मार्केट की है, तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि पैलेट और पावर दोनों कंपनियों के बीच में समन्वय अगर हो जाए तो पैलेट भी आज की तारीख में इतना अवेलेबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं काफ़ी सारे स्टेटों से भी और काफ़ी सारे स्टेट के एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूं, जो बायोमास ब्रिकेट एंड पैलेट एसोसिएशन है उससे जुड़ा हुआ हूं। तो मैं मोटा मोटी बात करूं कि 800 से 900 मशीन्स अभी गुजरात में चल रहे हैं अकेले। राजस्थान में भी मैं प्रेजेंट हूं, तो मैं आपको बताऊं 500 से 600 मशीन्स अभी राजस्थान में चल रहे हैं, 400 से 500 एमपी में चल रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में, यूपी में 500-600 मशीन है, महाराष्ट्र में भी इतने ही हैं। विविध हमारे जो राज्य है सभी राज्यों में इस तरह से इस अनुपात में जितनी बड़ी मात्रा में राज्य है उतनी बड़ी मात्रा में अभी मशीन्स चल रहे हैं। सारी मिला के टोटल अभी बात करूं तो मिशन समर्थ नहीं आया था तब तक 6000 हमारी काउंटिंग में थे कि 6000 मशीन्स भारत में चल रहे हैं। मिशन समर्थ ने जो 2 साल में इतना बड़ा यानी अभियान चलाया है, तो आज की डेट में हमारे अनुमान से 9 से 10 हज़ार मशीन्स चल रहे हैं। एक मशीन की मैं बात करूं तो 20 टन एवरेजली पर डे बायोमास ब्रिकेट या पैलेट बनाते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो पर डे 2 लाख टन की कैपेसिटी हमारे देश में अभी हो गई है। और मेरा ये मानना है हर 4 गांव के बीच में, हमारे देश में 4.5 लाख गांव है, हर 4 गांव के बीच में एक मशीन लग सकता है, क्योंकि एवरेज 3-3.5 हज़ार एकड़ एक गांव की ज़मीन है। उसको 50% अदर फ्यूल में, अदर बायोमास में गिन लेते हैं, तो अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में गिन लेते हैं। 50% अगर प्रोडक्टिविटी बायोमास जनरेट करने की अगर हो तो 1500 से 2000 एकड़ की अगर बायोमास हम करें तो एवरेजली देश का 1 एकड़ में 1 टन बायोमास एवरेज जनरेट होता है। तो एक गांव में हो गया 1500 से 2000 टन बायोमास। एक मशीन को अगर एवरेज 20 टन अगर बनाता है 300 दिन के लिए 6000 टन, 5000 टन, 6000 टन बायोमास चाहिए, तो उसके लिए एक मशीन सुचारू रूप से अच्छी तरह से चल सकता है 4 गांव के बीच में। तो ऐसे करें तो हमारे गांव 4.5 लाख गांव है, 1 लाख मशीन हमारे गांव अपने देश में चल सकती है। कुल मिला के बहुत पोटेंशियल है, सभी लगा सकते हैं, लगाइए। मेरा प्रेजेंटेशन अभी यहाँ पर नहीं हो पाया क्योंकि कोई टेक्निकल क्षति की वजह से, और मेरा निवेदन यहीं मैं पूर्ण करता हूँ, मेरा उद्बोधन पूर्ण करता हूँ। नमस्कार। सर का एग्जीबिशन में स्टॉल भी है, अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप सर से उनके स्टॉल में एग्जीबिशन में मिल सकते हैं। धन्यवाद, और धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। और अब अगला प्रेजेंटेशन है श्री संदीप शर्मा से। ही इज़ अ हेडिंग एग्री इन अर्थवुड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड and is a science graduate and MBA. Previously, he was heading department in ITC, Intertech and SGS, and he's going to speak on changing world climatitude. So, ladies and gentlemen, स्वागत करते हैं श्री संदीप शर्मा जी का, और आपसे पुनः निवेदन है सर कृपया अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुति 10 मिनट में ख़त्म करें। Good afternoon, everyone. I should rather say good night. Everyone is sleeping. So please, this is a very important topic, and which topic I'm going to cover? I'm going to cover all the farmers. I'm representing farmers. So how we can give the benefits to the farmers with this project. From where I can change? So I'm from Earthwood Services. We are leading carbon verifier of this world, and this is our tagline, changing climatitude. Where's the remote? Oh.
So like I told you, this is our story. We are leading carbon verifier. We have done almost 2,000 carbon offset projects. We have international accreditations, almost more than 12. In fact, one gentleman asked one question also, that from where we can get this information that this fuel is a net zero, and from where we can get this information. So there is a website called UNFCCC, from where you can get all these information. Vera is also there, where all the projects are listed. You can take out all the information from there. We have 5 global offices. We are about to open 2 more. So this is our journey, how we have started. We have started in 2012, and now we are in 2022. I do not have that much time, otherwise our like cap is of 5:30, so we'll be thrown out. So these are our services. We are into climate change, agriculture, ESG, environment, sustainability, and government. Last but not the least is sustainability. So I'm going to present here about agriculture and how we can give the benefits to the farmers. I was in the conference another day with Mr. Nag, and he has invited me. Thank you so much, sir. So there we have discussed about problems related to supply chain, how we can assure our supplies from the farms, and also there is a problem of transporting the raw material to the plant. So here we go, the solution is there. Government has announced 10,000 FPO scheme. They have introduced this scheme in 2020, where these FPOs will be given the grants, management cost, and also a trained professional who is going to train these farmers on different projects, on ODOP, one district, one product, and other schemes also. So my suggestion is that if we can introduce FPOs in this scheme, through which like 3 years they have their management cost, they have equity grant with them, they have another financial schemes also with them, through which they can open their own plant. And last but not the least, they are the owners. Farmers are the owners, because either 300 farmers, 500 farmers, 1,000 farmers, they all are equal shareholders. So in this way, we can solve this problem. So we have almost 35 FPOs in different states. Rajasthan, we have 5 blocks, 3,000 farmers we have been mobilized so far. Uttarakhand, Uttar Pradesh. These are the deliverables we have given. So this is how we have increased the income of farmer, by providing them input directly. We provided them the licenses, so they can take it from the company itself, and they can distribute it. So in this way, they can earn the revenue for the FPOs also, and they can get those inputs at a lesser prices. Then technology, we are providing drones, exposing to different technologies for their new setup plants, like one plant we set up for the mustard in Rajasthan, and we are about to open in Binoli. This block is in Bagpat district. So aggregation, like the problems we were discussing, that aggregation is the biggest problem in this. But here, if, for example, farmer is the owner and he is aggregating and he has his own plant, so he can aggregate at his own place, he can process it and directly can supply to the authorities or whosoever is the agency. So my request is, again, if NTPC or other organization can make some MOUs directly with the FPOs and can give them financial aid, that is the collateral kind of fees, if they can provide. Because in Spurti Yojana, already collateral is available for 5 CR, and 10% is the amount which farmers or the promoters, they need to assemble. So that 10%, also 18 lakh rupees they can arrange. But if we can arrange the rest amount, then definitely we can open this in every block. And we can also identify the blocks which are near to these plants, so that we can easily supply. FPO, we know, I'm running little fast. So
FPO role in biomass. We have already discussed, but point-wise I'll discuss. Providing knowledge and training. We can do some programs with the help of knowledge partners to the farmers. We can give the information and can help them setting up the plants. If not, then at least how to provide the raw material to the pellet making manufacturing companies. Access to finance, which is already there, but for the initial plans, finance, if we can do something, then definitely these FPOs can stand their own and they can directly supply. Aggregation to produce. They are already aggregating their crops. So biomass is very easy thing also to aggregate for them. Marketing. Marketing is, initially I told that 10,000 schemes. So CBBO is the bridge between farmers and central government. So CBBOs are already helping farmers to set up their marketing. So we are always there. So that part CBBO will take care of. Last but not the least is collaboration with research institutions. So this is the technical thing. Most of the things we have covered, so I don't want to get into that. So that's it. That's from my end. Thank you so much. Thank you very much, Undine. I would now invite Shri Pavan Kumar, our last speaker of the conference. He has completed his BTech in Agricultural Engineering from Ludhiana and has industry experience of 11 years, currently working as product specialist, Hay and Forage India in CNH Industrial Private Limited, formerly which was known as the New Holland Fiat Private Limited. And he's going to speak upon sustainable management of crop residue solutions. And once again, requesting you, sir, to kindly conclude in 10 minutes. Over to you. Thank you, ma'am, and thank you the whole team, and namaste to everyone. My name is Pavan Kumar, and I am representing CNH Industrial here. So, sustainable mechanization of crop residue management, basically I am going to represent this slide. Yeah, before going to that, I just want to introduce what is CNH Industrial. Many people have the confusion in their mind that it's not New Holland, but actually it is a New Holland. CNH in India, we can say that we have 3 manufacturing plants. One is New Holland plant in Greater Noida, just 30 kilometers away from here. Then second plant is in Pune, Chakan. In that we are manufacturing our scale balers, small scale baler and some tractors in Pune plant. And third plant is in Pithampur near Indore. So there we are manufacturing the construction equipment. And we are also introduced our finance part that is known as CNH Capital, who can provide the finance for the entrepreneurs on the basis of project and equipment wise. So that's based in Gurgaon. And then we have some technical centers throughout the country. Then this is our main portfolio that we are having tractors from more than 30 HP. And now we are bringing in TREM 4 around 120 horsepower tractor that where we manufacture in India, in Greater Noida plant only. And we are also bringing some big tractor like 165 and 145 horsepower tractor to India for this biomass management project. Why paddy straw is burned? Paddy straw को आग क्यों लगाई जाती है? जस्ट सबको पता है कि बेसिकली हमारे पास कोई कंक्लूडेड सोल्यूशन नहीं है कि हम कौन सा फार्मर्स को बोले कि आप जल्दी से अपने खेत को क्लियर आउट करके आगे की फसल उगा सकें. अभी तक हम कुछ क्लियर आउट नहीं कर पाए. इक्विपमेंट वी हैव, इक्विपमेंट से हम क्या करेंगे, बेलिंग कर देंगे, उसके पैडी स्ट्रॉ खेत से निकाल के बाहर ले आएंगे. बट व्हाट टू डू विद दैट पैडी स्ट्रॉ? सो करंटली वी आर इन डिस्कसिंग फेज एंड thanks to this meeting and this whole organization that they have starting that pellet making project, biomass fuel की तरह पर यूज़ करने का स्टार्ट किया है पैडी स्ट्रॉ को, जिससे कि हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में 100% मतलब जो पैडी स्ट्रॉ बर्निंग को स्टॉप कर पाएँ. और न्यू हॉलैंड आज मैं इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, बेसिकली वी आर ओनली द कलेक्टर एंड ट्रांसपोर्टर. वी आर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो कि हेल्प करती हैं आपको कि किसान के खेत में से पैडी स्ट्रॉ को कलेक्ट करके और वहाँ से बेल्स बना के, ताकि आप उसको ईजिली स्टोर कर पाएँ कम से कम जगह पर और
बहुत ही ईजिली उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कम से कम डीजल कंजम्पशन और टाइम में कम से कम समय में। उसके बाद हम स्टॉकिंग कर सकते हैं बायोमास पावर प्लांट को देके, या फिर पैलेट इंडस्ट्रीज़, देन CBG प्लांट्स आल्सो, डेयरी इंडस्ट्रीज़ आल्सो, सम कुछ राजस्थान के हैं, कुछ गुजरात के हैं जो कि पैडी स्ट्रॉ एनिमल्स को भी खिलवाते हैं, तो वहाँ पर भी वी कैन डू दैट। बट मेन सप्लाईज विल बी द पैलेट इंडस्ट्री जो कि NTPCs करने वाली है विद 5 to 7% ब्लेंडेड डेट वी ऑल नो। देन उसके बाद ये एक सिंपल प्रोसेस है कि हार्वेस्टिंग के बाद जस्ट आग लगा दी जाती है उसको स्लैशर से काट के, बट हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, तो कि हमारे पास सोल्यूशन है कि हम उसको इजीली उठा सकते हैं। लूज़ को उठाना लेबर बहुत चाहिए, टाइम बहुत चाहिए, बट इस मशीन से द्वारा हम इजीली उसको पिक कर सकते हैं, उस खेत से हटा सकते हैं। देन ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है फॉर दिस बायोमास मैनेजमेंट। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ देखें, देन स्मॉल स्केयर बेलर BC 5060 जो कि 20 से 25 किलो की बेल्स बनाता है, जो कि लेबर से मैनुअली हम पिक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर राउंड बेलर्स, देन इवन वी हैव द बिग बेलर्स। राउंड बेलर, बिग बेलर्स, दे आर 100% मैकेनाइज्ड, उसमें लेबर बिल्कुल नहीं लगेगी। आपको ट्रैक्टर हैंडलिंग इक्विपमेंट चाहिए लाइक JCBs, बैको लोडर जैसे, और टेली हैंडलर्स, सो उनसे हम इनको स्टोर और पैकेजिंग कर सकते हैं। देन इन द लास्ट 2 इक्विपमेंट्स जो राइट साइड पे हैं वो है रेक। रेक इज प्ले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस बेलिंग इंडस्ट्री। रेक का क्या काम है कि अगर आप बेलर को पूरे खेत में घुमाएंगे पैडी स्टॉक कलेक्ट करने के लिए, तो वो बस उसकी विंडोज़ बना देगा ताकि आप कम से कम जगह पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेलिंग कर पाएँ, तो आपका समय और टाइम कम व्यतीत होगा। मोस्टली मैं बता दूँ जो BC 5060 सबसे छोटा बेलर, वो हम एवरेज बताते हैं कि 40 to 50 टन पर डे करता है, बट इन पंजाब सम पीपल आर मैनेजिंग फील्ड सो करेक्टली या फिर बहुत अच्छे से, तो कि वो 80 to 90 टन्स भी कर लेते हैं पर डे। और ये बेल फॉर्म्स होती हैं, आप बेल की फॉर्म में दे सकते हैं कि व्हाट वी हैव विद अस। देन दिस इज अ सोल्यूशन BC 5060, वो जो मैं आपको बता चुका हूँ, समय के कारण मैं थोड़ा सा इसको जल्दी स्किप कर देता हूँ। और ये हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप क्या कहते हैं कि कंबाइन चलने के बाद जो अवशेष, फसल अवशेष रह जाती है ज़मीन पे, उसको काटने के लिए अभी क्या है, अभी रोटरी स्लैशर चलाते हैं, जिसको नॉर्मली 50-60 हज़ार का इक्विपमेंट है जो कि ईजिली उसको काट देता है। बट आने वाले टाइम में बड़े इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो हमें बड़ा स्लैशर चाहिए जो कि अपकमिंग है, बड़े रेक अपकमिंग है। देन लोडर, ग्रैबर, 4 व्हील ट्रैक्टर्स वी आर ब्रिंगिंग। सो दिस इज द स्लैशर वन। ये स्लैशर सिर्फ काटने का काम करता है। स्टॉप हो गया। देखना हैंग हो गया। हाँ अब ठीक है। और उसके बाद ये रेक है। रेक स्लैशर के कटिंग के बाद उसका विंडरोज लाइन बनाने का काम करती है। वीडियो नहीं प्ले हो रही। ठीक है, वीडियो प्लेज नहीं हो रही है बेसिकली। ये रोला बार रेक है, ये बड़ी रेक है, मतलब वो RKG 129 से इसका काम भी सेम है विंडरोज बनाने का, जो कि आपके फसल अवशेष को जो कि स्लैशर से कटा हुआ है उसको लाइंस में पूरे खेत में लगाती जाएंगी। इसको चलाने के लिए 65-75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमारा स्मॉल स्केयर बेलर आता है जो कि 20 से 25 किलो की गांठ बनाता है। देन ये राउंड बेलर है, ये 250 किलो से 300 kg की बेल बनाएगा। दिस इज RB 150। अब ये भी राउंड बेलर है, बट इसका क्या फ़र्क है, इसमें क्या रहता है कि बेल्ट है आपको दी हुई है जो कि कोर से ही डेंसिफाई करता जाता है। सो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है एक बेल के अंदर। या एंड दिस वन इज़ बिग बेलर। बिग बेलर है, इसका जो प्रोजेक्ट है तकरीबन नियर अबाउट 2.5 करोड़ के आसपास जाता है। इसको चलाने के लिए 165 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। और ये बेलर्स अपना 400 से 500 किलो तक की बेल ईजिली मतलब बना देता है और बहुत ज़्यादा डेंसिफाई होती हैं।
इन बड़ी बेल्स का क्या मकसद है कि अगर आपका जो एरिया है, मतलब अगर प्लांट 50 या 100 किलोमीटर दूर है, तब आप इसको ईजिली वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में। लेकिन इस बेलर को वायबल बनाने के लिए अपने पास एकर्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, नियर बाई मतलब 10 किलोमीटर्स की रेंज में, तब ये बेलर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और इनकी जो ROI है डेट्स आल्सो वेरी एक्सेलेंट। सॉरी, वो वीडियोस आई थिंक शायद नहीं चल पा रही है। एंड थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच इंडीड। और अब निवेदन करना चाहेंगे हमारे डिस्टिंग्विश सेशन चेयर श्री अवधेश कुमार यादव जी से कि वे सभी स्पीकर्स को एक मोमेंटो भेंट करें। We would felicitate Shri Mukesh Patel from Renewable Energy. Thank you, sir. We now felicitate Shri Sandeep Sharma ji. And Shri Pawan Kumar ji. And I would now like to invite Dr. Tripta Thakur, DG NPTI, to kindly do the honors of felicitating our session chair, Shri Avdesh Kumar Yadav. Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, with that, we now move to the concluding session. I would request all our speakers to kindly collect boxes for the trophies from backstage on the right-hand side of the stage. So ladies and gentlemen, for the concluding session, I have the privilege in inviting on stage our distinguished chairperson, Shri Praveen Gupta ji, member Thermal, CEA. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, to welcome him. Joining him, Shri Sudeep Nag ji, mission director, and Dr. Tripta Thakur, DG NPTI. So ladies and gentlemen, warmly welcome all our eminent dignitaries on the stage for the concluding session. And in this session, we have few awards to present. I would request our chairperson, Shri Praveen Gupta ji, to kindly do the honors of presenting the awards. I would request Dr. Thakur and Shri Naksa to kindly join our chairperson in giving away the awards. So ladies and gentlemen, we present an award for appreciation, in appreciation of highest biomass co-firing in thermal plants. And the award goes to NTPC Moda. Their representative to kindly come and receive the award.
Ladies and gentlemen, please put your hands together for NTP Simoda. The next award is in appreciation of distinguished contributions in designing of the Samarth website, and the award is presented to Shri Manjeet Sinha. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Manjeet Sinha for beautifully designing the Samarth website. And the next award is in appreciation of distinguished contribution in developing the Samarth acronym, which goes to Shri Abhinav Kumar. Shri Abhinav Kumar for developing the Samarth acronym. And the next award is in appreciation of distinguished contribution in designing the Samarth website. Shri Dheeraj Sharma. And in the end, we would like to invite for designing of Samarth logo, Shri Dharmesh Kumar. Please put your hands together for Shri Dharmesh Kumar for beautifully designing the Samarth logo. We thank our distinguished session chair and Dr. Thakur and Shri Nagji for doing the honors. And may I now request our distinguished guest, Shri Praveen Gupta ji, Member Thermal, CEA, to kindly say a few words addressing the August House present here. Over to you, sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Praveen Gupta ji. गुड इवनिंग सुदीप नाग जी, तृप्ता ठाकुर जी, मेरे साथियों जो डिफरेंट राज्यों से आए हैं, सेंट्रल केंद्रीय सरकार के थर्मल पावर स्टेशन से जो आए हैं, मेरे साथी फ्रॉम सीए, सीआरसी, एमओपी। सुबह से हमने देखा दैट दिस इज़ a national seminar which is being held by National Biomass Mission. I would like to first congratulate Mission for the excellent work which they have been doing since inception of National Biomass Mission, way back in, I think, 2021. And they have already conducted many seminars at thermal power station level, state level, for the benefit of all the stakeholders, including farmers. And with their efforts, we have achieved at least some progress in this, and we have been able to fire around 1 lakh metric ton of biomass in around 41 thermal power stations. You know that coal, being the backbone of the country, will remain that for few more years. And we have seen last year also that coal transportation, coal availability was an issue. And to mitigate, to some extent at least, we can use biomass, and we can have double benefit of benefiting the farmers, plus reduce pollution, which we see every year during the months of winter season. Plus, we are reducing the CO2 emissions.
not directly connected to that visibility issue which we face, but it helps us in reducing CO2 emissions. There were a lot of questions regarding how CO2 emission is being reduced when we are burning biomass. It has been repeatedly told that biomass is a carbon neutral fuel. So whatever we emit using biomass, when we fire it, it gets absorbed by the same biomass which we grow next year. So worldwide, all these studies have been done, and it is proven that biomass is a carbon neutral fuel. So we are saving carbon dioxide also, and we are saving precious coal also, which is fossil fuel. And as we are moving towards clean energy transition, this will play also a very important role in mitigating and achieving our climate goals, plus the energy transition issues. Since morning, I think we have presentations on different subjects related to biomass, starting from supply to how we can utilize. And I must congratulate NTPC that they have done excellent work by showcasing the use of biomass firing in thermal power plants. And I hope that all other power plants in the country will also be initiating biomass co-firing in their plants. You may face some problem. I am not denying that, because initially NTPC also faced some problems, but we can use the experience of NTPC so that we don't get the same problem at other thermal power stations. And I hope that everybody who is present here must have benefited from this. Even if you have any other queries, Mission is always there for your help. CA is also there to help you. In whatever manner we can help, we will like you to help. And I once again congratulate Solar Mission and NPTI for conducting such a nice workshop today. Thank you. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, I would like to request Dr. Tripta Thakur, Director General NPTI, to kindly share her views on the proceedings of the conference today. Over to you, ma'am. Thank you very much. It's my pleasure actually to conclude the whole session. And we have seen that every stakeholder which are involved with the 3P project are present today. We got the blessings from our Honorable Minister of State, also the Secretary Power and the CMD NTPC. So overall, it's a very nice effort to make the smooth transition, which we really would like to do to take care of our environmental issues, and especially in Delhi to improve the air quality. Because those who comes outside the Delhi, they always says in the time of winter that this is the hell and how you people are living. So it's a duty for everyone to make the air quality index of Delhi in a livable condition. Right now it was, many times it's not livable condition. So पराली के द्वारा हमको आगे चल करके अपने पावर प्लांट में पैलेट के द्वारा कोयले के रिप्लेसमेंट के लिए ये जो समर्थ मिशन काम कर रहा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे आगे जनरेटिंग स्टेशंस इस चीज़ के लिए तैयार होंगे, इसमें सभी तरह के इनपुट्स की हमें आवश्यकता है। एक सप्लाई चेन बनाना है, अच्छे एग्रीगेटर्स लाना है, नए बिजनेस मॉडल बनाना है, साथ ही साथ लोगों को अवेयर करना है, किसानों को हमको जागरूक बनाना है, तभी ये सारा जो मिशन का कार्य है वो संपूर्ण हो सकता है। आज बहुत अच्छा सेशन रहा, आप सबका धन्यवाद जो आखिरी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि जैसे ये शुरुआत है और आगे जा कर के ये दिनों दिन उन्नति करते हुए हम मिशन समर्थ का कार्य को एक बहुत अच्छे मुकाम पर आगे लेके आ सकेंगे। धन्यवाद। Thank you very much indeed, ma'am. And before
we have the concluding remarks and propose the vote of thanks. I would request MD sir to kindly present a small gift, a token of gratitude and appreciation to our session chair, Shri Praveen Gupta ji. And Mission Director, sir, to also present a token of gratitude to Dr. Tripta Thakur. And I would request Sri Praveen Gupta ji to present a small token of gratitude to our Mission Director. Praveen Gupta, sir, to kindly present a small token of gratitude to our Mission Director. Thank you very much indeed. I would now request Shri Sudeep Nagji, the Mission Director, to kindly give his concluding remarks and formally propose the vote of thanks. Over to you, sir. Good evening. It has been a long day today, but considering the requirement of the subject, the noble cause of biomass co-firing in coal-fired thermal power stations, I believe that it's worth to spend at least a day on this subject and to get enough information, technical, commercial, regulation on this, and also to listen to the seniors, to our leaders, and to the persons who are giving us guidance in this field. In the morning session, the eminent personalities who were there on the dais had all mentioned about the requirement of biomass co-firing in thermal power plants, starting from Honorable Minister of State, Sri Krishan Palji, Secretary Power, Secretary CAQM, Chairperson CAQM, Chairperson CA, and also CMD NTPC. All have echoed the same thing, that it's time that we grab the opportunity of utilizing biomass as a fuel in the thermal power stations, where we can use the existing setup, we can use the existing infrastructure in co-firing this particular fuel, and by which we can really reduce our coal dependence to the percentage up to which it is technically possible, at least 10%. Now we have understood that at least 10% it is quite possible. And as we have already seen the numbers, that enough quantity is available in the country to cater to the 10%. The only thing which is required is the development of the ecosystem for supplying that much quantity, for bringing that much quantity from the field to convert it to fuel, and also putting it on fire in the thermal power stations, where we can get twofold benefits. One is reducing pollution, which can be caused by firing this biomass in the fields, and at the same time, we can reduce carbon footprint from the thermal power stations, in which we are firing not so clean the coal. As far as the different sessions which our member thermal and also DG NPTS had mentioned, that we had covered the required aspects, the technical aspects, where representative from NTPC Netra has given the brief outlook about the technical features of biomass, and NTPC Dadri
who had started this initiative long back in 2018. They have shared their practical experience. So I believe that it can remove the apprehensions of some of the GENCOs who had, since beginning, had some apprehension that whether this can be fired along with coal, whether there will be any problem of firing this with coal. So that can be removed with the experiment which has been taken up by Dadri long back. Then there was a requirement of developing market platform, which our Secretary Sir has mentioned very emphatically. So the model of developing one platform has been shown by Biofuel Circle. They have shown how they have already created one model market platform for joining all the stakeholders. Then we had been talking about the financial schemes, which is really required. So along with the financial grant scheme, which also has been mentioned by Secretary Sir and also our Minister Sir, where the grant scheme from CPCB, MNRE is there. But at the same time, the favorable loan schemes have been taken up by different nationalized banks. So SBI has given one glimpse of it. The Bharat Capital has stated that the demand risk and the other risk which has reduced, and they have shown a pretty favorable picture by which we can go ahead with this particular kind of mission. The Satyajit Renewables, they have acknowledged the efforts of the mission and the Government of India, and also they have given their experience of setting up biomass pellet plants, also about the details of the machines. The Arthur Private Limited, I think they have shown that they have empaneled the CBBOs under SFSC under Government of India, by which they are helping the farmers in doubling their income through forward and backward linkages by implementation of business plans and the management of resources of the farmer organizations. In fact, this is very much required under today's context, where we want to bring these farmers, FPOs, in loop so that they can take up the job of collection, aggregation, and transportation of biomass, and even convert it to biomass fuel to be supplied to power plants, when the CNH Industrials, which has got a wide set of equipments to be used for agriculture handling. So they have shown the examples of different machines and also given the technical specification, I think, which was very, very informative to all of you. So at the end of the day, I must say that because of these nice presentations, this particular program has been very, very successful, and also with the enthusiasm, with the participation shown by all the participants here who have come from diversified areas of biomass co-firing. Because of you only, this particular program was so much successful. I must thank the entire NPTI team under the leadership of Dr. Tripta Thakur, DG NPTI, who had worked tirelessly for making this program successful. At the same time, I will congratulate and I will give my thanks to my colleagues from the Biomass Mission who have also worked tirelessly to making this program very, very successful. I must thank all the other organizers, all the other hotel staffs, all the other persons who have been associated for making this program successful. I want to thank the media persons for coming here and giving and taking the required inputs for this particular program. I must thank all the dignitaries who were present there, which have already been, the vote of thanks has already been given by DG NPTI. I don't want to echo that, but without their support, guidance, and leadership, we could not be here. So the Ministry of Power, led by our Honorable Union Minister, R.K. Singh Saab, and Secretary Power, Alok Kumarji, and also the Minister of State, Sri Krishan Palji, all of their guidance have brought us to this particular position. And I must thank all of you, all the biomass stakeholders who are present here for coming forward. And I would request you, please do not leave it here, take it forward. There may be many participants who could not come here, who could not be here. I believe that the persons who have come here, you will disseminate your knowledge, your experience from which you have gathered today, and 1% of you will definitely disseminate this knowledge, and you will motivate at least 10 other persons who are known to you, who could not be present here, for taking this
mission successful. So let us look towards a very, very bright future of this biomass co-firing. And I believe with this cleaner and greener atmosphere which we can bring, by this we will do our responsibility for our next generation. Thank you. Thank you all. Thank you very much indeed, sir. And ladies and gentlemen, before we close the proceedings, I take this opportunity once again to thank each one of you for your participation in making this conference a huge success that it was. And ladies and gentlemen, once again reminding everyone about the registration forms and the feedback forms. We kindly request you to fill in the feedback forms and hand over at the registration counter to receive your gift. And also, ladies and gentlemen, we have tea and coffee served outside. Please help yourselves to a cup of tea and coffee before you leave the venue. With that, we would now play the video which could not be played earlier by one of our eminent speakers. And ladies and gentlemen, from Mission Director, we would like to felicitate our dignitaries, DG Ma'am and Sir, Praveen Gupta Sir. In fact, I had forgot to mention the leadership and support from our respected member thermal CA, Sri Praveen Gupta Sahab, who has been a constant support in this, both technically and commercially, and from all aspects. He has been supporting us. He has been giving us motivation to carry this mission forward. So as a token of respect from our mission, we would like to felicitate him with a small memento. And also, I would like to felicitate our DG NPTI, Tripta Thakur ma'am, who has also been supporting throughout our process of awareness campaign or anything whichever is required from NPTI side. So please give a big hand to both of them. Thank you very much indeed. So ladies and gentlemen, once again reminding everybody about the registration forms and the feedback forms. You all are requested to hand over the feedback form to receive your special gift from the mission side. And ladies and gentlemen, once again thanking each one of you for your patience, for staying here till the end with us. And above all, thank you for your participation in making this event a huge success that it was. We had some very worthwhile speeches, addresses, and presentations. Of course, they all will be shared by each one of you through the website. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, for Shri Praveen Gupta ji. And now we would like to honor Dr. Tripta Thakur. Thank you, sir, for doing the honors. And ladies and gentlemen, with that, we now close the proceedings of the conference, playing the video which we could not play earlier. So with that, ladies and gentlemen, so Tripta ma'am to kindly do the honors. Sudeep Nag, MD. We also honor the mission director, sir.
So ladies and gentlemen, with that we close the proceedings. Have a wonderful evening ahead. Safe drive home. Good evening and namaskar. हेलो, आवाज़ कम कर दीजिए, आवाज़ बंद कर दीजिए। ये पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो आप अगर देख सकते हैं, तब वीडियो नहीं चला था। पैलेट बन रही है, जैसे ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्लीन हो रहा है। यहाँ पर मिट्टी कंकड़ पत्थर होगा तो निकल जाता है ये, और ये ग्राइंड होता है। यहाँ पर पैलेट बनाने के लिए मटेरियल को ग्राइंड करना होता है। ये मटेरियल इसमें ग्राइंडर में जो हैमर है, हैमर मिल में हैमरिंग होता है और पाउडर फॉर्म हो जाता है इसका। और पाउडर फॉर्म होने के बाद में फिर ये आगे पैलेट मशीन में पैलेटिंग होता है। ये ग्राइंड मटेरियल आके और ये पैलेट मशीन में पैलेट होता है। ये पावर प्लांट के लिए सफिशिएंट होता है। 16 mm से 20 mm पैलेट बनता है ये। और आप ये देख सकते हो कि ये पैलेट मशीन जो है वो स्मूथली बहुत चीपेस्ट कॉस्ट में ये पैलेट बनाता है। ये इस तरह से पैलेट बन जाता है, अपने वेट से ये टूट जाता है और जितना चाहिए उस फॉर्म में ये आ जाता है। थैंक यू।